Bismillahirrahmanirrahim. Fidya is an amount which is given to poor Muslims as a compensation for each missed fast of Ramadan. In any fast, if we miss in the month of Ramadan and someone is very old or very sick, now they don't have any hope for recovery, or they won't get any strength, a very old person, then that amount which one will be given for that roza, that fast, it is called fidya. Fidya can only be given by a very old person or an extremely sick person who has no hope of recovering from his sickness after Ramadan. अगर कोई बहुत ओल्ड है और इतना बूढ़ा हो गया है कि अब उसके अंदर में वापस ताकत आने की गुंजाइश नहीं है, या वो इतना बीमार है कि वापस उसके अंदर में हेल्थ और वो तंदुरुस्ती आने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो फिर वो एक एक रोज़े के बदले में फ़िदिया देगा जो सदक़तुल फ़ित्र के बराबर जो अमाउंट होता है. सो फ्यू रूल्स related to fidya. The fidya amount is equal to the amount of sadaqatul fitr. It can be given in cash, money, or kind food. When we can give food, how it is like sadaqatul fitr's amount, we can give food to, or we can give cash, money. Ask some pious alim regarding the amount to pay for fidya. Today's time, fidya, like normally here, 7.5 or $10 amount that, so according to which year we are giving and how much amount we should find out, then we should give. And the fidya amount has to be given to poor Muslims. Poor Muslim who is zakatable, we should give them. It is not permissible to pay the fidya for the fast before the month of Ramadan. After Ramadan, if we can't fast in the month of Ramadan, so after Ramadan we can give. Before Ramadan we can't give. Then if after Ramadan the old person gains strength or the sick person recovers, he has to keep qada of the fast that he missed. He will be rewarded for whatever fidya he gave. Sometime someone very old, he said, now I can't get strength, and he gave fidya already for that roza. But later on he, mashallah, became strong, he very healthy. Then he have to keep qada fast. Now whatever amount he gave, that one he will be rewarded. He will get reward. So अगर कोई बूढ़ा है और उसने फिदिया ऑलरेडी दे दिया पहले से कि भाई अब तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, शायद मैं जाने वाला हूँ, अब तो ख़त्म मेरी उम्र, और फिदिया दे दिया, फिर लेकिन बाद में वापस माशाल्लाह अच्छा हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तो फिर उसे रोज़ा रखना पड़ेगा और कज़ा करनी पड़ेगी, और बाद में जो उसने दे दिया फिदिया वो उसको सवाब मिल जाएगा. और इसी तरह अगर कोई बहुत बीमार है, लगता है कि अब तो भाई ख़त्म हो गया, अब तो कुछ उम्मीद नहीं है वापस वो तंदुरुस्ती आने की, लेकिन अगर फिर भी अच्छा हो गया तो फिर उसे कज़ा रखनी पड़ेगी, कज़ा रोज़ा रखना पड़ेगा, और बाद में जो उसने फिदिया दे दिया उसका सवाब उसे मिल जाएगा. सुब्हानहू व तआला ग्रांट अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन, ग्रांट अस बेनिफिशियल नॉलेज. आमीन.